Okay, so let us start then. Rules of recording. Okay, rules of drafting. So kichita basic rules prathame ame discuss kardaba. Then we will go to the first draft jota aji ame two-part draft kariba. Okay, deeds kari karu ame start kariba. So as far as possible documents should be self explanatory. माने को ऊपर आपण लेखुचंदी ना एटा गोटे सेल डीड होची कि एटा कोन होची सेटा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी थिबो जण को खोजिया पे पड़िबनी कि कोन जिंसडा कोन. Okay, as far as possible documents should be self explanatory. As far as possible काई कहला किछिटा जगह रे ओके आपण को टिके पढिया पे पड़े जानिया पे कोनटा अछि. Right, the draftsman should begin by satisfying himself that he appreciate what he means to say in the document. ता अर्थ हला आपण properly सेटा ओके आपण को एम कोन आपण को क्लाइंट कोन तार एक्सपेक्टेशन कोन आपण कोन पई ओके एटा लेखुचंदी सेटा आपण क्लियर हबार अछि. Right. Okay. Okay, I think it's working now. So well-drafted document should be clear to any person who has competent knowledge of the subject matter. जेटी के जानी थी वो विषय रे सिसटा पढ़ले जान पारे कि हां एटा गोटे हला सेल डीड टे कि कोन. Draft must be readily intelligible to a layman. जी किसी जानी नहीं भी law ऊपर से भी पढ़ले किसी at least okay से जानी पारिबो. The document may not be perfect because it says too much or too little or is ambiguous or contains one or more of the facts because it has to be applied in circumstances which the draftsman never contemplated. This should be avoided in drafting of the documents. Okay, so माने कौन आपण को ड्राफ्ट टा पूरा परफेक्ट न होई पारे बट बेसिक की कम कथा कहबा कथा नुह किछि एम्बिग्युइटी थिबा कथा न जेति की दरकार जहा आपण चाहउचंती सेति की कहबार अछि. ओके काहे कि आपण जदी देखिबे जो सब हमर डिफरेंट प्लीडिंग्स होची कन्विंसिंग होची एतर हजार प्रकार रो भूल थाए. ओके केना आगु को भी आपण देखिबे कि सेही टेक्निकल ग्राउंड्स रे ओके कोड ताको बाहर कर देनी. ठीक अछि कहि देनी कि एडा एते कोन स्पेलिंग मिस्टेक अछि आउ थरे दियो. ओके से फिल्म रे जेमति से अक्षय कुमार जो थिला फिल्म रे कोन नाम मन पड़नी ओके प्रोसिक्यूशन को प्रोस्टिट्यूशन लिखाइतला. राइट एमति आउ कोन कोन सब से करथिला. राइट तो से बहुत जण एडवोकेट्स यू नो बट डिफरेंट बैकग्राउंड्स रो आस्तांती तो कार इंग्लिश भलो नथियो कोन थियो तो कोर्ट सेगुडा सब दे टेक दैट इनटू कंसीडरेशन. एमति ना कि पांचटा भूल हे गला स्पेलिंग रे तो यू नो ताको आपण बार पकई दन सेमति होएनी. ओके बट जेतिकी हेई परिबो आपण को देखियार अछि एरर फेरर आपण करिबेन. राइट so this should be avoided in drafting of the document. Nothing should be omitted or admitted at random on the document. That is to say negative statements should generally be avoided. It is both important. Negative statements should generally be avoided. Nothing is to be omitted or admitted at random. बुझ पाले किछि भी जिंस ओमिट होबनी कि ऐड होबनी रैंडम माने गोटे पर्टिकुलर अपन जो देखिबे दैट वी विल सी टुडे तो गोटे सेटा पूरा क्रोनोलॉजिकली थाए एया हितला तापर एया हितला तापर एया हितला तेनु आमे ए रिलीफटा चाहूछु. ओके इट शुड बी ए कनेक्टेड चेन ऑफ इवेंट्स मझिरे किछि मिसिंग होबा कथा नो. इट शुड बी लाइक फ्लोइंग वाटर पानी जेमति फ्लो करछि आपण कहउछन एथि ब्रेक हिछि ओके सेटा कंटीन्यूअस फ्लो करछि पूरा कोहेरेंटली फ्लो करछि. ठीक अछि एठी भी से ही होबा कथा. राइट तापर आउ कोन कोन इंपोर्टेंट जिंस हमको माइंड रे रखियार अछि जहां भी आपण लिखिबे सेथर जो लैंग्वेज लेखा हबो दैट शुड बी ओके जुरिडिकल लैंग्वेज. ठीक अछि तो एंति नै कि सेठी किछि हमें लाइक यू नो अनपार्लियामेंटरी लैंग्वेज यूज कर देलु जेते भी हमर राग थाउ जा भी हो. ओके so use of juridical language should be made. Then text of the document should be divided into paragraphs. It is बहुत important. आउ से नंबरिंग हुए जेमति हम देखिबा तो जजमेंट जाला बेले ओके से रेफर करंती कि ये पैराग्राफ ये लिखचंती. ओके
Each paragraph should be self-explanatory and should be properly marked by use of numbers. ठीक है, of letters for clauses, subclauses and paragraphs. तापरे schedule should be provided in the documents. Schedule is a useful part of the document and should contain relevant information which forms part of the document. Whether any portion of the document should be put in the schedules depends on the circumstance. Schedule is important in the document as it explains useful matters which forms the part of document and should not be ignored and should not be inserted in the body of the document. Very important. Schedule ta last re roibo. Apana main document ro body re pasai debeni. Okay. Schedule ta. The main function of the schedule is to provide supplementary text to the document with clarity and convenience. Right. The active voice is preferable to passive voice. Ame essay essay jeto lekhudulu. Essay presi re mu kon कहली. आपण पैसिव वॉइस रे लिखिबे, एक्टिव वॉइस रे लिखिबेनी, किंतु जेतबेले आपण ड्राफ्टिंग करिवे सेतबेले एक्टिव वॉइस रे प्रिफर करा हबो. ठीक अछि, गुडा कोट एते देखंदिनी, बट दीज आर द गोल्डन रूल्स ओके ऑफ ड्राफ्टिंग अंडर इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस. कैन आमे तो इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस फॉलो करछु ना कोर्ट रे, राइट. The active voice is preferable to passive voice. एटा मन रखियो. Unless the passive voice in a particular connection makes the meaning more clear. ठीक अछि. So एटा हला कोन करिवार अछि, कोन अवॉइड करिवे. तो these are the do's. ठीक अछि. Don't worry if you have not written, लेखिया दरकार नै. एटा आरो जो पीडीएफ टा लास्ट रे हबो, मु ताको पीडीएफ कन्वर्ट करि कि आपनकर ये रे दे देबी ऐप रे. ठीक अछि. तो don'ts. ठीक अछि. do's and don'ts जदि हम देखियो तो एगुडा हला बेसिक requirements जोड़े. Right. Now coming to do's and don'ts. Right. Do's and don'ts माने short रे जेतेबे आमे बे लेखिया पे स्टार्ट करूछु, आमे कोनटा लेखिबु कोनटा लेखिबुनी ड्राफ्टिंग रे. ठीक अछि. That we have to see. So first reduce the group of words to a single word. गोटे पूरा phrase अछि, ताकू see due economy of words. कोट रो टाइम इंपोर्टेंट. हैला आपण गोटे जिंस जोटा गोटे लाइन रे लेखा बा, आपण 2 पेज लिखछन. ठीक अछि. तो कोड काहे के टाइम वेस्ट करियो, 2 पेज पढिया पेज तो गोटे लाइन रे लिखाई परदा. सो ऑलवेज रिड्यूस द ग्रुप ऑफ वर्ड्स इनटू सिंगल वर्ड. शॉर्टन करिवे ताकू, प्रेसी भलिया समराइज करिवे. यूज सिंपल वर्ब फॉर ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स. अवॉइड राउंड अबाउट कंस्ट्रक्शन. राउंड अबाउट कंस्ट्रक्शन कोन जोटा हम इंग्लिश रे कहूछु बीटिंग अराउंड द बुश. से जिंस बुले 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 आपण ओके पुनी से जिंस रे आसी पहुंचबे पर गोल हे जो. सो राउंड अबाउट कंस्ट्रक्शन डायरेक्टली कहिबे जहा आपनकर जहा फैक्ट्स उडा स्टेट करिवे, आपन को कोन रिलीफ दरकार सेटा लिखिबे. अवॉइड अननेसेसरी रिपीटेशन. फोर्थ पैराग्राफ रे गोटे जिंसटा लिखिची, पुनी 15 पैराग्राफ रे ताकू खाली पैराफ्रेज करिकि लिखुची, माने ता लैंग्वेज बदली कि लिखुची, सेटा दरकार नै. राइट. अवॉइड अननेसेसरी रिपीटेशन. राइट शॉर्टर सेंटेंसेस जोटा कि हमरो 1 नंबर रु भी ड्रॉ कराइची. ओके बेसी लंबा करिनि, शॉर्टर सेंटेंसेस. Express the ideas in fewer words. Prefer the active to passive voice sentences and choose the right words. ठीक अछि. Fewer words. Due economy of words हमें ताको कहउछि. जेति की दरकार सेति की वर्ड्स यूज करिवार अछि. एमति नै कि ओके तो माने पेपर तो अछि सेमति किछि ता ऊपर रेस्ट्रिक्शन नै, जहा लिखिया कथा जेते लिखिया कथा लेखो. ठीक अछि. सेमति नै. Of course important जिंसो सब आपण यू देयर विल बी नो ओमिशन. ओके जोटा हमें देखिलु, बट unnecessary जिंसो बेसी सेतरे पॉसिबल हमरो नै. तापरे know exactly the meaning of words and sentences you are writing. कोन लेखा होची ता मानेटा आउ तारो इंप्लिकेशन टा से कोन इंडिकेट करची सेटा जे ड्राफ्टर अछि से जानिबा कथा. Put yourself in the place of the reader. Read the document and satisfy yourself about the content, interpretation and sense it carries. सेटा आपण करा ओके जानिबार अछि कि आपण जदी रीडर आपण तो पढी कि आपण कोनटा बुझिबे, केमति ताको इंटरप्रेट करिवे, ठीक रे इंटरप्रेट करि परिबे जदी ता माने किछ ओटे भूल अछि सेतरे. ठीक अछि. सो एटा हला कोन करिवार अछि. अच्छा कोन अवॉइड करिवे ताको भी तो देखियार अछि ना. सो एटा डूज थिला. देन वी विल सी सम डोंट्स. ओके व्हाट वी शुड अवॉइड. So these are the things we should keep in mind जोटा कि हमको टिके avoid करिवार अछि. The following things should be avoided by drafting the document. Avoid the use of words of same sound.
like employer and employee, avoid. Okay. When the clause in the document is numbered, it is convenient to refer to any one clause by using single number for it. Okay. For example, in clause 2 or say single number. Okay. Negative in successive phases should be carefully employed. Tamane kon? Okay. He did not say that it was not done by him. Hela, not the thara astuchi se tara bahut complicated ହେଇଯିବ. Negative in successive phrases, okay, would be very carefully employed. Draftsman should avoid the use of words like less than, more than. Instead, he should use not exceeding. Confusing ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ସେଟା କମେଇବେ. If the draftsman has provided for each of two positions to happen without each other and also happen without either, will not be sufficient. He should write either or both or express the meaning of the two in other clauses. ठीक है. So सेटा है कथा, right? So these are the theoretical things. Now let us go to the examples. Okay. अच्छा, common errors अपना कौन? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଡ୍ରାଫଟିଂ କରୁ ଆମେ ତାକୁ ଓଭରଲୁକ୍ କରିଦୁ. କାହିଁକି ଆମେ ଓଭରଲୁକ୍ କରିଦୁ? ଆପଣ ଦେଖିବେ ବହୁତ ମାନେ ସିନିୟର ଲୋକମାନେ ବି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଡ୍ରାଫଟିଂ ରେ ଗୁଡେ ଏରର୍ସ ଥାଏ. ତ ଫର୍ଷ୍ଟ କଥା ତ କୋର୍ଟ ତାକୁ ଏତେ ସିରିୟସଲି ନିଅନ୍ତିନି unless it is a glaring mistake. Okay. So ଏତିକି କେତେଟା ଜିନିଷଟା commonly ଭୁଲ ହୁଏ ଡ୍ରାଫଟିଂ ରେ. While writing and typing, the following mistakes generally occur, which should be avoided: and or, any and my, no and no. Okay. Ebe kon hochi apan jo mane chamber jauchandi, there are many applications. ठीक अछि. जो गुडा already setara thousands and thousands of ready-made templates गुडा अछि. अपन rent agreement करियार अछि तो अपन just खाली data दे दियंतु ताकू user interface रे से rent agreement बाहर कर. ता देर कंडीशन ऐड करिवार अछि, तार भी ऑप्शंस अछि. ओके. जोटा आगुरु ड्राफ्टिंग करिया पे हमको बहुत टाइम लागतुला, एबे सेटा एते टाइम लागुनी, इमीडिएट हे जाउछि से. राइट. तेणु आमर अभ्यास हो गलानी ऑटोमेशन रो. आउ से लेखा हबो ड्राफ्ट आउ ऑटोमेशन रो कले गोटे लाभ कोन, तार लैंग्वेज रो प्रॉब्लम नहीं. ओके. तार लैंग्वेज रो प्रॉब्लम नहीं. तो स्पेलिंग मिस्टेक्स हबनी, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हबनी, सब ऑर्डर रे रहइबो. दीज आर द थिंग्स. ठीक अछि. सो एगोडा किछिटा एरर्स आपण देखिए, जनरल एरर्स जदि हमें ताकू कहि परिबो. ओके. So now let us go to first हमें first part टा टिके देखिबा. Okay. That is जेतेबेले हमें गोटे deed will start with some basic things. Okay. That is हमें deed टा कोन सेटा जानिबा. तो ता आगुरु जो माने contract already पढ़ी सारचंती, you know about agreements. While going through this drafting, दीटा जिनस हमें देखिबा, गोटे informal agreement आ गोटे formal agreement. Okay. Informal agreement और formal agreement आमे प्राय सब formal agreement संगे ही deal करी. But still then informal agreement कौन सेटा टिके जानता. Okay. In interpretation of informal agreements, the rule to be applied is that of reasonable expectation. That is to say, the agreement is to be interpreted in the sense in which the party who used the words in question should reasonably be apprehended that the other party may apprehend them. If the intention is manifested ambiguously, the party manifesting the same in an ambiguous manner ought to have had reason to know that manifestation may reasonably bear more or one meaning and the other party believes it to bear one of those meanings, having no reason to know that it bears another meaning that is given to it. Okay. तमाने कौन basically informal agreement लेखा ही नहीं सेटा. ठीक है. That's a oral agreement है ला कि वो just sir they have agreed without writing it. Okay, in black and white and signing and witnesses से करो ना, बने witnesses थिले भी सेमती से अपन करो formally से माने किसी sign pen करना. एटी कौन ना informal agreements void no. Informal agreements भी अपन तको. Okay. So valid thing is that
से एग्रीमेंट रे रिजनेबल एक्सपेक्टेशन कौन अछि ओके तो सपोज मु कहली आपण कहले मते गोटे पड़ी जिबार अछि मते टिके आपण बाइक टा दियंतु मु आपण कहबी ठीक अछि आपण गोटे दिन पे बाइक नै जानते कि असुविधा नै आपण इन लिeu ऑफ दैट यू विल गिव मी समथिंग मनी हे पारे आ गोटे कोन ठीक अछि जा भी हो तो सेटा गोटे रिजनेबल एक्सपेक्टेशन हला कि आपण 1000 टका दे दियंतु दिन को कि अलगा कोन दे दियंतु ठीक अछि व्हाटएवर रिजनेबल एक्सपेक्टेशन फ्री रे तो मु दोन ठीक अछि जेतले मु कहूची आई विल लेंड यू माय बाइक लेंड कहूची माने तो ऑब्वियसली आई एम एक्सपेक्टिंग सम हला तेनु जे जे से एग्रीमेंट ता करूची ओके तो सी कोन कोन कहिछि से ठीक अछि सो दीस थिंग्स वी हैव टू कीप इन माइंड तो एनीवे आ संगे हमर एते ड्राफ्टिंग रे सब इनफॉर्मल एग्रीमेंट ड्राफ्ट कोन करा हमरो काम हैला फॉर्मल एग्रीमेंट को ड्राफ्ट करियो फॉर्मल एग्रीमेंट जेतेबेले क्लाइंट आसी कि आपन सब जिंसोडा कहबो मते ए जमी किनियार अछि ए किनियार अछि ओके मते ओडे सेल डीड कर दियो ठीक अछि सो वी विल स्टार्ट विथ डीड्स ठीक अछि अच्छा सेमिति तरह टेक्निकली गले तो बहुत गुडे रूल्स फरिका अछि ओके सेटा मु सेपट को जाउनी मु डायरेक्टली आसुची डीड टा को हमें केमती लिखिबा ओके सो हाउ वी विल राइट ए डीड ठीक अछि सो व्हाट इज ए डीड आउ डीड रो डिफरेंट कोन कोन आपण लेट्स से कोन पय हमें डीड टा करछु ओके एनी इंस्ट्रूमेंट by which two or more persons agree to affect any right or liability okay जेमती आपण गिफ्ट रो डीड हैला सेल डीड हैला पार्टीशन डीड हैला पार्टनरशिप डीड हैला सेटलमेंट डीड हैला ओके लीज बाय डीड हैला मॉर्गेज बाय डीड हैला ओके lot of deeds both type of करते ओके तो कौन रहिबो ताले ओके so what is a deed जदि आपन को पचरा हैला what is a deed so एतिकी हमरो जानिबार अछि तीनटा पॉइंट ठीक these 3 points we have to keep in mind a deed is a writing on paper vellum or okay parchment paper तो जानछथि vellum कोन एटा हला तर एकेडमिक डेफिनेशन ओके हमें तो पेपर ही करिबा हमें को वैलम की ओके पार्चमेंट रे को यस एनीवन जानि जंदी वैलम कोन पार्चमेंट कोन फॉर्म्स ऑफ पेपर ओके जोथरे के लेखा होची राइट पेपर वैलम और पार्चमेंट देन आउ कोन deed is a writing which is sealed and delivered wherein an interest right of property passes or an obligation binding on some person is created or which is in affirmance on some act whereby an interest right to property has been passed तो सेगुड़ा सब ता माने कोन फर्स्ट हैला पेपर रे थिबो सील थिबो आउ डेलीवर हे थिबो ठीक अछि इट मस्ट बी डेलीवर्ड सो डीड ता ए तीनटा जिंस जतरा हमें लिखिबा ए तीनटा जिंस हमको माइंड रे रखियार अछि अवश्य डेलीवरी एंड ऑल दोस थिंग्स सेगुड़ा ओके ड्राफ्ट्समैन रो कंसर्न नो ठीक अछि नाउ कमिंग टू मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट डीड जतले में ओके बेसिकली कहूछु ताले डीड रो पार्ट्स कोन सी देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ डीड्स ओके बहुत गुडे डीड्स रो टाइप अछि बट कथाटा हला सेगुड़ा हमरो रिक्वायरमेंट नहीं आमे सीधे आसीबा कि व्हाट आर द टर्म्स दैट आर यूज्ड इन ए डीड ठीक अछि को टर्म आपण डीड रे यूज करछंती सो टर्म्स व्हिच आर यूज्ड इन ए डीड ठीक अछि 5-6टा टर्म अछि जोटा जानिबा हमको निहाती दरकार जतले हम गोटे डीड रे ड्राफ्ट करियो तो फर्स्ट हला डीड पूल व्हाट यू मीन बाय डीड पूल a deed between two or more parties whereas many copies are made okay as there are parties so that each may be in possession of a copy this arrangement is known as deed pool ठीक अछि बहुत गुडे पार्टीज अछन सपोज गोटे आपनकर ओके गोटे क्लब हेछि बहुत गुडे केसेस लेट्स से एबे जो सुप्रीम कोर्ट रे पिटिशन हेछि रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट डिसीजन ऑफ 3 years practice सेतरे ओके अवश्य सेटा तो you know that is a petition writ petition but anyway हम जदी ओवरऑल ताको जनरलाइज कर दा 50 टा बिला आसीगल सेम जिंस कहउछंती ताको कोन करछन ना सुप्रीम कोर्ट ताको क्लब कर देले 50 टा केस को एका साथे नै आसी
ठीक अच्छे सो डीड पूल कौन जदि मोर पार्टीज आर देयर ओके सो जेतिकी पार्टीज अच्छी सेतिकी कॉपीज बनवा पे पड़े सो ईच पार्टी विल बी इन पोजिशन ऑफ ए कॉपी सो इटा है डीड पूल ठीक अच्छे डीड पूल तापर रहिला डीड पोल a deed made and executed by a single party okay example है power of attorney through is called a deed poll kahin kemti koha jay because in olden times it was polled or cut okay level at the top it had a polled or clear cut edge okay it is generally used for the purpose of granting powers of attorney and for exercising powers of appointment or setting out an arbitrator's award it is drawn in first person usually drawn in first person माने ओके फर्स्ट पर्सन माने आई ठीक अच्छे मु तो मु से हिसाब मु आंकु पावर दउची कि ये मो जगह रे मोर प्रॉपर्टी को हैंडल करिवे टोटल मैनेजमेंट और ये आंकर बिकिबार भी तो जहाँ तंकर मो पावर दवा तो दउची ओके सेटा मु लिखि भी से हिसाब आई श्री सुहाग सुंदर नंद ओनर ऑफ ए अमुक प्रॉपर्टी आंकु ए पावर टा दउची फर्स्ट पर्सन से ठीक अच्छे सो डीड पॉल्टा फर्स्ट पर्सन रे रहइबो आपन एगुड़ा हमको मे बी हमको एगुड़ा भी लिखिया में पड़ी पारे बट एनीवे सेटा बेसी यू नो दैट इज नॉट दैट मच सो तापर आसिला आपनकर नेक्स्ट टर्म जोटा इंपोर्टेंट हम पे दैट इज इंडेंचर कौन those deeds in which there are two or more parties it was written in duplicate upon one piece of parchment and two parts were severed and so as to leave an intended or vary edge forging being then rendered very difficult indentures are so called because at one time they were indented or cut with uneven edge at the top in olden times the practice was to make as many copies or parts they were called of the instruments as they were parties to it which parts taken together form the deed and to engross all of them of the same skin of parchment right so seta hela indenture right tamane kono parchment ko काटी देबे जदि ओके किरा हला तो तार एजेस उडा आपनकर यूनिफॉर्मली तो कटिबनी ओके इंटरलॉकिंग टाइप रो ताको એટલે મિસા અવસ્થા જણા પડિବ કે હા ગોટે પાર્ચમેન્ટ રહી ओके so that is a indenture then Xyrographum कौन another type of indenture in olden time it was written between two or more copies of document and the parchment was cut in a just line through this word okay the idea was that the difficulty of so cutting another piece of parchment that it would easily fit exactly into this cutting and writing constituting a safeguard against fraudulent substitution of a different writing for one of the parts okay तमने कोन एबे कोन पेपर आपनकर अछि तो कंटिन्यूटी रोच गोटे पेपर सरले आ गोटे पेपर प्रिंट हे जाउछ आगुरु सेमति नथिला जे पार्चमेंट घरिका जो आपण यूज करथिले ट्री रो एक्सट्रैक्ट सरिका कि सेगुडा तो सेमति नथिला ठीक अछि तो ए फॉर्जरी ओके मिनिमाइज करिया पे एटा कराउटला राइट of the original this practice of indenting deeds also has ceased long ago igura just apanakar knowledge mai kuauch ko court re apana ebe igura dekhibe na kon okay and really now obsolete but the practice of calling a deed executed by more than one party is called indenture and that is still continued okay in England ठीक है so एटा किछटा basic जिंसो जेतु हमें okay तापरे you know what is an escrow account ठीक अच्छे एस्क्रो अकाउंट आपण पढ़िबे कोथरे कमर्शियल लॉ रे पार्टनरशिप फॉर्म्स एथर सब आपण पढ़िबे एस्क्रो ओके सो सिम्पली जिंते एस्क्रो अकाउंट कथा कहलु एठी हमें देखिबा डीड एस्क्रो ओके डीड एस्क्रो कोन देखंतु ए डीड साइन्ड बाय वन पार्टी will be delivered to another as an escrow for it is not a perfect deed it is only a mere okay writing that is scriptum unless signed by all parties and dated when the last party signs it the deed operates from the date it is last signed. Escrow means a simple writing not to become the deed of express to be bound thereby till some condition should have been performed. Okay, so that deed escrow.
ठीक अछि एटा परफेक्ट डीड नो ओके इट इज जस्ट ए राइटिंग ठीक अछि तो सेटा डीड केतले हबो तंतु चारटा पार्टी अछथि लास्ट पार्टी जेतले साइन करिवो सीलिंग हबो सील लगा हबो डेट पका हबो ठीक अछि सेतबेले सेटा डीड हबो ता आगुरु ता बॉडीटा ऑलरेडी अछि परंतु से फोर्थ पार्टी से साइन करे देरी करा बिफोर ही साइंड इट सेटा को हमें डीड एस्क्रो बोली कहू ओके सो एटा किछिटा टेक्निकल टर्म जोडा हमको जानिबार अछि ओके तापरे नेक्स्ट पार्ट हैला जेतले हम ओटे डीड टे को ड्राफ्ट करिबा तार इंग्रेडिएंट्स कोन व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ए डीड हैला सो सेटा टिके भलरे आपन को जानिया पे पड़िबो राइट काहे ना आपण से हिसाब रे डीड टा को ड्राफ्ट करिबो राइट सो हमें सात सातटा पॉइंट्स रे ताको देखिबा व्हेन यू आर ड्राफ्टिंग ए डीड these are the parts or components or clauses of deed first है description of the deed title कौन पाई से deed टा होउछ ओके डिटेल्स हमें देखिबा place and date of execution of a deed description of parties to the deed recitals ओके recitals माने कोन जहा आपनकर कहबार अछि रिसाइट कोठु अछि काई ताको रिसाइटल को गला जनरली आपण कोनोसी गोटे जिंस जोटा कि लंबा आउ जोटा कि छंद रे अछि ओके यू नो व्हाट इज दैट इज व्हिच इज इन म्यूजिक मेट्रिक ठीक अछि आपण कोन कहउछंती रिसाइट ए पोएम हम कहउछु टेल ए पोएम हम कहउछु सिंग ए पोएम रिसाइट ए पोएम कोन पई पोएम टा एटले रिसाइट करछंती गोटे पर्टिकुलर मीटर रे ताको रिसाइट करछु मीटर ठीक अछि मीटर माने कोन दैट इज अ म्यूजिकल गेज उठुथिबो तापर पडुथिबो तापर बैलेंस होथिबो राइट फॉर एग्जांपल समस्त आपण गायत्री मंत्र जानछो ठीक अछि क्वेश्चन इज व्हाई इट इज गायत्री मंत्र व्हाई इट इज कॉल्ड गायत्री मंत्र बहुत जण भाबंती सेटा गायत्री कि भगवान थिबे तांको पई ठीक अछि कि सूर्य भगवान को पई राइट सो दैट इज नॉट द केस सेटा तो सावित्री को पई कराउची राइट गायत्री मंत्र कौन पाई कौन से गायत्री टा कौन दैट इज एक्चुअली वन ऑफ द मीटर्स म्यूजिकल मीटर्स ठीक अछि वेरी फ्यू पीपल वुड नो ऑफ दैट राइट तो रिसाइटल से पई कोच माने आपण डिटेल्स उडा देबे तापरे टेस्टाटम कंसीडरेशन जदी सेठी देन रिसीव्ड क्लॉज ठीक अछि ये ताको रिसीव कला एंड ऑल दोस थिंग्स सेटा भी आपण को लक्ष्य अछि तो हमें तार एग्जांपल लेके देखिबा ओके तापरे कोन received clause पर you will find the operative clauses description of the property sale deed करछु ना हमें normally deed माने बहुत प्रकार deed हमें देखिलु but exam रे पढिबार chances maximum है sale deed रो ठीक अछि description of property parcels clause okay तमे कोन से लैंड पार्सल कोन अछि आपन को जो description दिया हबो property रो ठीक अछि तार नॉर्थ रे कोन साउथ रे कोन ईस्ट रे कोन वेस्ट रे कोन कोठी पब्लिक रोड अछि कोठी कोन अछि से सब जिंस आपण लिखि एक्सेप्शंस एंड रिजर्वेशंस प्रीमाइसेस एंड हैबेंडम कन्वेनेंट्स एंड अंडरटेकिंग्स टेस्टिमोनियम क्लॉज सिग्नेचर एंड अटेस्टेशन एंडोर्समेंट एंड सप्लीमेंटल डीड्स एंड एनेक्सचर और शेड्यूल्स तामाने आपण कहबे अच्छा हम जदी गोटे डीड टेब ड्राफ्ट करबा ई 17 टा कंपोनेंट थिबा दरकार ना दीज आर द टोटल कंपोनेंट्स आ भीतर बहुत गुडा ऑप्शनल अछि जोटा हम छाड़ दे पारि हमर दरकार नै हम सेतर काय पछिया बुझि पारले तो सेटा आपण एबे जतरे करिवे व्हेन यू एक्चुअली राइट और एक्चुअली ओके डीड टा हम देखिबा एनालाइज करबा सेतले आपण जान पारि सो हमें व्हाट आर वी गोइंग टू डू एक्चुअली हमें केमिति एटा पढिबा सो आई विल गिव यू ए जिप फाइल ठीक अछि तो सेटा मु ग्रुप रे देबी काहे कि ना ऐप रे पकेले से डाउनलोड करि होबनी सेटा ग्रुप रे दे देबी गोटे जिप फाइल सेतरे बहुत गुडे ड्राफ्ट्स अछि ओके डिफरेंट ये पे हे सब गुडा एते हजार ऊपर ड्राफ्ट्स थिच हला डिफरेंट सिचुएशंस पे किंतु आपण पैटर्न टा दी तीनटा देखिले आपण जान जिबा अच्छा ताले मते एमती लिखबार अछि आपण देखिबे बही रे ड्राफ्टिंग प्लीडिंग कन्वेंसिंग बही रे जो स्ट्रक्चर टा देइची गोटे डीड रो कि गोटे जहां भी आपण डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट करछथि एक्चुअल कोर्ट रे ओके से पैटर्न टा टिके अलगा था ठीक है तो एक्चुअल कोर्ट रे पैटर्न टा टिके अलगा था नाउ द क्वेश्चन इज
आम कोर्ट रे जो पैटर्न फॉलो होची ताकू फॉलो करिबा ना हमरो टेक्स्ट बुक रे जो पैटर्न देछि ताकू फॉलो करिबा टेक्स्ट बुक रे जो पैटर्न देछि सेटा स्टैट्यूट हिसाब रे देछि स्टैट्यूट रे जा देछि बदल सीपीसी रे जा से तार पछरे जो आपनकर शेड्यूल से जा सब अछि से एग्जैक्टली सेम जिंस से देछि ठीक अछि बट सेई गुडा तो रहिबो ता सहित किछि चेंजेस भी हाई कोर्ट्स किंबा कोर्ट्स करिका आनंती आउ टिके सुविधा पई तेनु सेई पार्ट्स गुडा भी हमें इनकॉर्पोरेट करिबा जोडा ओडिसा हाई कोर्ट और हमर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से यूज होछि दीटा जिंस हमको देखिबार अछि okay so these are the 17 components of a deed remember all of them are not mandatory components some of these components are okay optional as well माने आमे एटले डीड लेखिबे एमति 17 टा पार्ट्स रे ताको 8 9 टा भी पारे ठीक अछि लाइक वी विल सी दैट नाउ ए जो 17 टा जिंस कहला एगुडा कोन let us come to the details of these 17 items okay so prathame obviously prathame कोन डीड ता कोन okay description गरिका सेटा आपनको clearly आपनको लिखिबार अछि okay so description of the deed title कोन पई से डीड ता आपण करचंदी okay so number 1 description of deed title ठीक अछि here you will just give you what is a deed ro कामोटा कोन को डीड एटा right so eta bahut important kaina we have said that in the features of a good okay document or drafting practice kono na it should be self explanatory sera je prathame padi do se jan de pari okay so the deed should contain the correct title such as this deed of sale this deed of mortgage this deed of lease this deed were conveyance this deed of exchange jaha bhi se deed ta jo hota hai okay these words should be written in capital letters in the beginning of document where it is difficult to locate the complete transaction out of number of transactions covered in the deed it may not be possible to give single name to the deed like deed of gift and such it would be better to describe the deed as this deed written in capital letters like this deed okay say hisab likha rachi this part hints that nature of the deed and gives a signal to the reader about the contents of the deed ta mane se janla acha eta sale deed eta okay mortgage deed eta lease bai chi eta kon seta prathame padi se jan pari right this part hints the nature of the deed and gives a signal to the reader about the contents of the deed sometimes a question may arise whether a particular instrument or document okay is a deed of conveyance of transfer to ascertain the nature of the document it becomes necessary to read the language of the document and locate the intention of parties which is the sole determining factor ठीक है कौन रहउछि सेटा मेन जिंस हला कि डीड कौन पई कराई छी okay that we have to keep in mind right sometimes a question may arise whether a particular instrument or document is a deed of conveyance or transfer okay so setara apon language ta padibe seta apon ku janibar अछि okay so anyway pratham jinsa सबटु important hela description of the deed title okay eta first thing you have to remember first component of your deed tapore ta tole kon roibo so ko jagare au okay kebe seta execute hochi place and date of execution of a deed right so that part you have to place and date of execution of a deed we first highlight the importance of date the date on which the document is executed comes immediately after description of the deed hela so deed hela this deed of mortgage made on the first day of January 1986 okay it is the date of execution which is material in a document for the purpose of application of law of limitation ठीक है maturity of period registration of document and passing of title to the property as described in the document thus the date of document is important hela so who deed prathame like the example dala deed of mortgage
made on 1st day of January 1986. Okay, I'll just ଆପଣ ଗ୍ରୁପ ରେ ଆगे ସେଟା ଦେଇ ଦଉଛି ଓକେ ସୋ ଦ୍ୟାଟ କ୍ୟାନ୍ ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ରେଫର କରିବା ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେଟା ଥିବା ଦରକାର I'll just put it ସେଟା zip file okay I know I hope you know how to deal with a zip file right so zip file ଟା ଆପଣ କିଛି ଗୋଟେ unzipping ଇଏ ଗୋଟେ ଥିବ ଯାହା ବି ओके सॉफ्टवेयर जहाँ 7-zip की जहाँ भी अपन को WinZip की जहाँ भी अपन यूज करते हैं zip फाइल टा मोबाइल रे भी ऑटोमेटिकली सेटा आर्काइव रे खोली छिबो ठीक अछि तो दिल्ली एबे ग्रुप रे राइट ओपन दैट अनजिप करके ओपन करंत 2000 प्लस ड्राफ्ट सेटा देखि हला सो यू कम टू डीड ठीक अछि तो सेटा এটা very important okay ଆପଣ ଚାହିଁଲେ এটা share ବି କରିପାରିବେ friends ସାଙ୍ଗରେ ଯିଏ ବି exam ଦଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ depend କରେ see I always believe that knowledge ଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ତ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ତାକୁ ଭଲରେ share କରିପାରିବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଠିକ ଅଛି ତ ଜରା ଏମିତି ନାହିଁ କି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ତ ମୁଁ ହିଁ ରଖିଦେଲି ତାକୁ ଠିକ ଅଛି so knowledge ଯେତେ share କରିବେ ସେତେ ବଢିବ ସେଥିରେ କିଛି problem ନାହିଁ okay so we will start with a registered sale deed ଠିକ ଅଛି ତ ସେଇ ହିସାବରେ you come to that part sale it is sabu achi special leave petition okay everything is there but anyway sale folder re first okay agreement for sale of a house द्वितीय नंबर से मु डायरेक्टली देई दोची सेटा के जी पुनी का को असुविधा हो कोन हो हैला एबे जोटा हमें देखिबा आई एम जस्ट डायरेक्टली गिविंग यू द वर्ड फाइल रे अछि आपण ताको okay you can open it किबा just a minute ताको extract करिया पड़ियो आई एम जस्ट एक्सट्रैक्टिंग इट will take around 2 minutes okay बड़ फाइल टा अछि आपण भी जो मन लैपटॉप रे अछि आराम रे कर परि फोन रे भी जदी आपण ट्राई इट ओके एतरे जो सेल अछि फोल्डर टा एतरे सब माने कहया को गले आपणकर जेते भी ड्राफ्टिंग जेते ड्राफ्ट्स आपणको दरकार सब एतरे अछि ठीक अछि तो आप भीतर के हमें सेमती पढी परिबा बट रूल्स उडा जानिया दरकार हैला एग्रीमेंट फॉर सेल ऑफ ए हाउस ए थ्रू हम एटा हम आज ओके एनालाइज करिया तो बहुत बडा देछि ता भीतर जोडा जोडा इंपोर्टेंट ओके थोर थोर हम देखो एनालाइज करिया तो ऊपर लिखिला कोन समस्त ओपन कर दैछन तो लेट मी पुट इट ओके आई नीड टू स्विच बिटवीन दीस टू एनीवे ठीक अछि अपन सेटा मु वर्ड फाइल रे दे देछि सेटा खोली जिवो अपन आरटीएफ फाइल अछि रिच टेक्स्ट फॉर्मेट
तो सेटा लैपटॉप रे डेस्कटॉप रे भी खोल जिवो आपण मोबाइल रे भी खोल जिवो ठीक एला खोली के देखो फर्स्ट देला कोन एग्रीमेंट फॉर सेल ऑफ हाउस ओके मो एटा गोटे स्क्रीनशॉट नै की लेट मी पुट इट देखि जेंदरा एग्रीमेंट फॉर सेल ऑफ हाउस हैला टाइटल ता देला ऊपर एग्रीमेंट फॉर सेल ऑफ ए हाउस क्लियर है गलु त माने एटा गोटे सेल डीड रहला ठीक अछि दिस एग्रीमेंट ऑफ सेल मेड एट ओके प्रथम से दे देला कोन जगह ऑन दिस डे ऑफ ए 2025 जाबी बिटवीन ए ओके माने एला गोटे पार्टी सन ऑफ जे भी ताको फादर को ना रेसिडेंट ऑफ जो विलेज जा पुलिस स्टेशन जा जिनते लिखा हुए हियर इन आफ्टर कॉल्ड एज वेंडर ऑफ द वन पार्ट एंड बी सन ऑफ ताकर जे फादर रेसिडेंट ऑफ हियर इन कॉल्ड द परचेजर ऑफ द अदर पार्ट ठीक अछि एतिकी से लिखिला बट सेट से पर्यंत ने जाइनु सो लेट अस जो 17टा पार्ट थिला तो एटा हला place and date of execution हैला place and date of execution ठीक अछि तापरे कोन जदि आपण डेट फेट न देले ताले कोन असुविधा होबो सेटा दैछि date of execution of document is inscribed on the deed the date is not strictly speaking an essential part of the deed a deed is perfectly valid if it is undated or the date is in an impossible one 30th February 2025 okay इम्पॉसिबल डेट तो डेट जदि इम्पॉसिबल की डेट दिया ही नहीं ताले डीड ता कोन इनवैलिड हे जिवो की नो इट इज परफेक्टली वैलिड हैला तो ई पॉइंट ता मने रखथिबे बट डेट इज इंपोर्टेंट बट इट इज टेक्निकली स्पीकिंग नॉट एन ओके if no date is given oral evidence will always be admissible to prove the date of execution only it leaves necessary to prove it okay आउ कहीं इंपोर्टेंट कहीं ना पर्टिकुलर टाइम भीतर आपन को डीटा को रजिस्टर करया पड़िबो इन इंडिया देयर इज अ शॉर्ट पीरियड ऑफ 4 months according to section 23 of registration act for its registration from the date of execution within which a deal must be presented for registration हैला तो अपन डीड एग्जीक्यूट करछन तार 4 मास भीतर आपन रजिस्टर करया पड़िबो सो सेट पॉइंट डेट टा इंपोर्टेंट ओके ताबे रजिस्टर करया पे आपन पड़िबो पता लगा बिना डेट रे कोन डीड रजिस्टर होबनी बट एनीवे सेटा रजिस्ट्रेशन एक्ट रे तला आपण ओके किबा इंटरव्यू स्टेज रे ई टाइप रो क्वेश्चन आपण को पचारी पारंती ओके सो दैट इज द सेकंड पार्ट तापरे आ परे असला कोन थर्ड अच्छा आ गोटे जिंस सेटा केते गुडे केस लॉज रे भी अछि कि जो फॉर्जरी हरिका हे जाय सेइस पई आपण इंग्लिश रे पूराटा लिखते नॉट इन न्यूमरल्स बट इन इंग्लिश तेणु कौन लिखा हम दिस डीड ऑफ लीज हैला फर्स्ट हैला डीड ऑफ लीज माने टाइटल कह देला मेड एट न्यू दिल्ली प्लेस कह देला ऑन द फर्स्ट डे ऑफ डिसेंबर 1 ओके 1988 ओके 1988 ठीक है तो सेटा आपण देखो इंग्लिश रे लिखि पारि बुझि परले सो दैट इज टू प्रिवेंट फ्रॉड एक्सेट्रा तो एटा हला नंबर 2 हला तापर देखंतु जो वर्ड फाइल ता खोलचंदी तापर से कोन दैछि प्लेस दे देला प्रथमे फर्स्ट तो ऊपर लिखिला एग्रीमेंट ऑफ सेल ऑफ ए हाउस दैट इज द टाइटल तापर आसला दिस एग्रीमेंट से कोन कहितला कोन कोन कैपिटल लेटर से लिखिबार अछि देखंतु से केमति लेखाइ छि सेतरे ओके एटा बहुत इंपोर्टेंट से जो फोल्डर ता आपन को देली कह गले हमरो जहा पडिबो ड्राफ्टिंग प्लीडिंग आंसर सब सेतरे ही अछि सेही पैटर्न रे ही एग्जैक्टली आपनकर फॉलो हो
और ये ओडिशा रे हमें किछटा ऐड करछु सेटा मु परे आपन कहबी कना से लोकल योडा भी ऐड करिया कथा बुझ पाले तो यू जस्ट सी एनी ड्राफ्ट यू नीड पावर ऑफ अटॉर्नी रो स्टार्ट करी कि आपन कर एनी ड्राफ्ट ओके सबु जाक एथरे मोर देन 2000 ड्राफ्ट्स अछि एथरे व्हिच इज अरेंज्ड as per your okay requirement हिसाब रे सब अरेंज कराई छै पावर ऑफ अटॉर्नी अलगा फोल्डर रे अछि सेल अलगा फोल्डर रे अछि मॉर्गेज अलगा फोल्डर रे अछि जोड़ा जा दरकार आपण देख परिबे जोड़ा हमर पढिबार भी नहीं ताकू भी दे दै छी ओके हमें मेनली तीन चारटा ओके टाइप्स मेनली आपण को पढिबार अछि सेल टा इंपोर्टेंट ओके but it has given everything like rent petition release plaint and written statement okay pleadings power of attorney सब गुड़ा आपण देखि परिबे ओके ए प्लीडिंग से जंती इंटरप्रेटर सूट गोटे केमती आपण ड्राफ्ट करियो ओके सो इट इज एंटायर आपणकर पूरा लॉ रे जहा 6 मास रे सेमेस्टर ला केते गुडे सिलेबस रे एटा मल्टीपल सेमेस्टर से थाए जंती ड्राफ्टिंग प्लीडिंग कन्विंसिंग पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 ओके ओके केते केते जगह रे एते इंपोर्टेंस दियंती तो गोटे की दीटा सेमेस्टर रे साल दियंती जहा भी हो ए जेते जहा हेई परिबो सब गुडा एथरे प्रेजेंट अछि हैला तो सेटा आपन को मु तो ऑब्वियसली इंपोर्टेंट गुडा सब करेबी पार्ट बाय पार्ट बट इट इज इन योर डिस्पोजल आपन जे फुल टाइम प्रिपरेशन करछन आपन हिसाब रे आपन देखि दे हैला एबे एमती नो कि 2000 टा को हम देखिया पड़ियो ता भीतर 15 20 टा इंपोर्टेंट ओके ओनली 15 और 20 आर इंपोर्टेंट मैक्सिमम ठीक अछि बुझि पाले तो एटा सेव कर देबे ओके ग्रुप रे देइची सो रहइबो मु ग्रुप रो डिलीट करबिनी सेटा इट इज ओपन फॉर यू टू शेयर ओके एटा शेयर भी करियो भलो शेयर इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपण निज बुद्धि यूज करिवे एटा शेयर करिया कथा शेयर न करिया कथा मो साइड टू किछ रेस्ट्रिक्शन नहीं यू कैन शेयर ओके जते कना एटा ओपन सोर्स रू आछि एमति त नहीं कि मु बने दी छेडे ओके बट अगेन द थिंग इज दैट सिंस कंपटीशन इज रियली टफ कौन शेयर करछंती कौन न करछंती सेटा टिके देखि कि आपण थरे पाई जानतो एपी तापर जा नोट्स फोर्स आपनकर शेयर कर देबे सो दैट एवरीवन इज बेनिफिटेड ठीक अछि तो यू सी देयर आर मेनी टॉपर्स जो माने जेतले स्टूडेंट लाइफ रे पाठ पढुतांती से माने बहुत ही इंट्रोवर्ट थांती से बेसी मिसा मिसी वंस दे गेट से माने पूरा ताकर जहा नोट्स हला ये हला सेटा से माने पब्लिक डोमेन रे दे दियंती सो दैट पीपल आर बेनिफिटेड बट आफ्टर दे गेट हला तो निजे आगे निज फाउंडेशन स्ट्रांग करंतु यू गेट इनटू द जॉब तापर बाकी आपण हेल्प कर देबे बहुत ठीक अछि सेटा भी टिके देखिया पड़ियो काहे ना अबे जंती से हिंदी फिल्म रे कोहे ना हिंदी सीरियल रे ओके भगवान सबका भला करे बट शुरुआत मुझसे करे काहे ना मु जानची मु भलो रे रहले मु 10 जन को हेल्प कर दे पारी राइट से कॉन्फिडेंस से मोर सामना वाला ऊपर रहि न पारे सी भल रे रहले सी आ 10 जन को इंक्लूडिंग मोर ओके बेनिफिट करियो कि नहीं सेटा भी किछि खराब न तेनु शेयर करंतु जा करंतु आई डोंट केतेडा जिंसो शेयर आपण करबाटा डिफिकल्ट जोडा कि ऐप रे दिया सेते मो एटा ऐप रे तो रहिबो बिकॉज़ जो स्टूडेंट्स माने अछंती ओके अदरवाइज आपण कोन कर परिबे ना ताको यूट्यूब ही डाउनलोड करिके ताको देखि दे हैला सो सेही पार्ट सुडा सरी गला टाइटल दिया गला ओके लुक एट दैट थिंग ठीक अछि से एग्जांपल ता देखंतु agreement for sale of house सरला टाइटल दिस एग्रीमेंट हैला कैपिटल लेटर्स एई गुडा रे ही मार्क आपण को रहइबो से जो जो जिंसो कैपिटल ले लिखछ आपण सिंपल लिखिया पड़ियो दिस एग्रीमेंट कैपिटल रे सरला ऑफ सेल ठीक अछि तो जणा पड़ला कि सेटा सेल रो एग्रीमेंट हैला मेड एट तो प्लेस दे देला ऑन दिस डे ओके ऑफ 18 नंबर से लिखुछ ऑन 15th डे ऑफ ओके 2025 जा भी सेटा बिटवीन तापर आसला कोन पार्टीज तो नेक्स्ट आसला हमकु जोटा इंग्रेडिएंट्स हमें देखथिलु दैट इज बेसिकली पार्टीज डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टीज ओके पार्टी की अपन डिस्क्राइब करिवे description of parties number 3 the basic rule is that all proper parties to the deed including inter parties should be properly described in this document because inter parties are pleaded as they take benefit under the same instrument while describing the parties the transferor should mention first and then transferee when there is a confirming party the same must be placed next to the transferor in the order of parties transferees comes in the last okay तो order of parties अछि को order रे आपण देबे ताले सेटा भी माइंड रे रखिया पे आपण को पड़ियो
Description of the parties should be given to prevent difficulty in identification. Suppose ଆପଣଙ୍କର seller, okay, ଆଉ ଯେ buyer ଦି ଜଣଙ୍କର ନାଁ ସେମ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ କଣ କରିବା? ଯେ ବିକୁଛି ତା ନାଁ ବି ଲେଟ୍ସ ସେ ସୁହାଗ ସୁନ୍ଦର ନନ୍ଦ, ଆଉ ଯେ କିଣୁଛି ତା ନାଁ ବି ସୁହାଗ ସୁନ୍ଦର ନନ୍ଦ, ତାହେଲେ କଣ କରିବା? Okay, so that is also correct. ତା ଡିଟେଲ୍ସ ଏତେ ଦିଆ ହବ ନା, son of a, अब फादर ना भी सेम, सेटा भी टिके डिफिकल्ट हिजो. ओके, बट देखंतु धरंतु सेटा भी हे गला, ता बेले कोन, ता परे से पुलिस स्टेशन और एड्रेस से सब तो डिफरेंट होबा कथा. ठीक अछि. एबे कोन बहुत जगह रे अपन देखियो से आधार नंबर भी दे दो. ओके, हैविंग आधार नंबर दिस वन लास्ट चार्ट डिजिट सेमति भी करछंती बहुत जगह, व्हिच इज आल्सो फाइन. सेटा तो केबे सेम होबन ना, बुझि पारले. सो नेक्स्ट, description of parties re, name comes first, then the surname, thereafter the address, followed by other descriptions such as son of, okay, wife of, daughter of, etc. It is customary to mention in India caste and occupation of the parties before their residential address. ठीक है, तो अपन बहुत जगह देखते हैं. However, presently mention of caste is not considered necessary, but to identify the parties if required under the circumstances, it may be necessary to mention the profession or occupation of a person party to the deed. For example, medical practitioner, chartered accountant, advocate, or likewise. In case of judicial persons like companies or registered societies, it is necessary that after their names, their registered office and the particular act under which the company or society was incorporated should be mentioned. For example, XYZ Company Limited, the company registered under Companies Act 1956 and having its registered office at 1 Parliament Street, New Delhi. In cases where the parties may be idle, then the name of idol and as represented by pujari or sevadar also should be mentioned. For example, the idol of Sri Radha Mohan Ji installed in Hanuman Temple in Meerut, okay, being 10 Jawahar Chowk, the address of the Lale Ki Bazaar, Meerut city, acting through its sevadar, okay, Pandit Krishna Murari Lal Goswami of Mathura. So different situation status dochi, but ete kathara la amar ete complex au ye amar direct jinso hi padiyo, right? So that we have to keep in mind. तापर यदि special type ro parties thibe, in the case the person under disability like minor, lunatic, etc., who cannot enter into a contract except through a guardian or what, in certain cases through guardian with permission of court where necessary, full particulars of the same should be given with the authority from whom a guardian draws power. Okay. For example, Mohan, a minor acting through Ramdev as guardian appointed by Civil Judge Class 1 Delhi by order on passed under Section AIA Act, okay, or Mohan, minor acting through its father and natural guardian Ramdas, etc. In this way, particulars for sake of identification of party should be given. Similarly, in case of partners, trustees, co-partners, full details of parties should be given for the sake of identification. Reference label of parties are put in parentheses against the name and description of each party to avoid repetition of their full names and addressee at subsequent places. The parties are then prepared to be their respective labels. Okay, jemti ki apna bracket re lekhuchandi, herein, from herein referred to as lessee, okay, or lesser, ja bhi apna. So next jetel debe apna lekhchani kona, whereas the lessee, okay, je jaha apna tapar lekhile pune auta na ta author lekhunandi apna. So you come to the example jota apna dharuchandi, okay, जो तरह से आपको लेबल सुना दिया है, कौन लेबल दिया है देखो तो son of देगाला call the vendor of the one part, okay, तो इठी तारा लेबल है vendor, and B, son of A, resident of A, herein after called the purchaser of the other part, the vendor and purchaser, okay. तापर ऐसा, whereas the vendor
is in absolutely seized and possession of or well and sufficiently entitled to on a house more fully described in the schedule herein under. Okay, the schedule जोड़ा से तारा side रे आजी से आजी सेटा description of property, details of property schedule रे दिया है. Okay, ए हिसाब रे सेटा लिखा है. Right. तापरे आउ कौन आपन important part रहला. So एगुडा आउ बितरे some examples you can take. The form is illustrated as under. This lease deed is made at New Delhi on the dash day of 2018 between Sri Vinod, resident of Aya, herein after called lesser. So सेटा bracket रे रहइबो. जेतला आपण herein after, okay, lesser of the one part and Sri jabi resident of, okay, whatever, herein after called lessee of the other part. ହେଲା one part other part. ठीक अछि आपनकर जो एग्जांपल दियंतु सेथर विषय लिखै छी. ओके आउ सेटा टिके माइंड रे रखथिबे कोटा से कैपिटल रे देछि. एठी जनरली सब स्मॉल रे देछि बट आपन को जो दिया है जोटा ओके सही हिसाब रे फॉलो करिवे. वन पार्ट अदर पार्ट सेटा से कैपिटल रे दउ देछि. ओके फॉर्मेटिंग गुला बहुत इंपोर्टेंट ड्राफ्टिंग रे नले मार्क्स कटिबो. ओके अच्छा आ गोटे जिन जी लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स अच्छा कि आगू जो मैंने हायर्स कर ठीक अच्छे तो से भी इंक्लूड करा पड़ो बहुत जगह राइट. तो सेटा कौन केमती करेंगे सो तार देखो इट इज ऑल्सो नेसेसरी दैट refusee of hires, executors, assigned liquidators, successors, etc. should be made against each party's name after putting labels. It shall safeguard the interest of the parties. So legal heirs of property of the party can take benefit on death of the original party when the easy identification of party is done by giving the notation of one part and other part will be written on first part for party 1 and second part for party 2 and third part for party 3. Okay, jitki ja parts apno hela. Okay, so between this called the lesser, okay, which term shall mean and unless it is repugnant to the context or meaning thereof, mean and include the heirs, legal representatives or assigns of one part and heir called the lessee, which term again same ଜିନିଷ. ठीक ଅଛି एटा एतिक लिखले कोन हो आउरी आपण परफेक्ट कर दोचंती आपणकर ड्राफ्ट डीड की जदि से ओरिजिनल ओके जे डीड करूचंती ताकर डेथ हे गला ताले इट विल बी इजी फॉर हिज हायर्स. ओके तो ताकर जा राइट से माने से हिसाब रे क्लेम कर पारे. किंतु नॉर्मली जतले ना लिखिबा गोटे आपण गोटे आपण सेल डीड ड्राफ्ट करंतु ठीक अछि तो एइडा एगुडा लिखिया दरकार नहीं. यू नो दैट बट नॉर्मली एगुडा हमर समय भी होबनी. तो जेति कि देइछि आपनकर मॉडल ये रे सेति कि आपण देखिबो. ओके whereas the vendor is absolutely seized and possessed of or well and sufficiently entitled to the house more fully described in schedule here. Okay, so say part ta आपनकर ताको कोन हमें कहबा. So it a parties gala between this and that, right? Next आसिल आपनकर जोटा हमें कहतुलो recitals. ठीक अछि. So recitals कोटा जोटा whereas रो start हुए हला recitals कोन ना it is a short story. ठीक अछि. So next you will go to the fourth component of your deed, that are the recitals. Whereas this and that said. Recitals contain the short story of property up to its vesting into transferors. Care should be taken that recitals are short and intelligible. Recitals may be of two types. One, narrative recitals, which relate to past history of property transferred and sets out the fact and instrument necessary to show the title and relation to the party of the subject matter
of the deed and how the property was originally acquired. तो एथरे कोन होबो ना कि जो आपण जानचंदी प्रॉपर्टी जतले किनिया पे जाउचंदी आपण इसी गोटे देखुचन एनकम्बरेंस चार्ट ये प्रॉपर्टी रो हिस्ट्री कोन 200 वर्ष आगु कहा नारे थिला सी कहा को बिकिला तापर सी कहा को बिकिला एबे जो लोक आपण को बिकुची लास्ट रे एनकम्बरेंस चार्ट रे ता नाटी अछि कि नै सेटा ही आपण मेनली देखन ओके दैट इज व्हाट यू सी हियर राइट सो सिला क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर रे थिबा दरकार ये किनिथिला तापर ये किनिथिला तापर ये किनिथिला in that way and in what manner it has developed upon grantor or transferor ठीक है तो सी कोडू किनला काटू किनला the extent of interest and the title of that person should be recited. It should be written in chronological order, that in order of occurrence. This forms part of narrative recitals. This is followed by introductory recitals which explain the motive or intention behind execution of deed. See এই जोटा हमें जनरली कहूचु ओके दिस पर्टिकुलर रिसाइटल नैरेटिव रिसाइटल प्राय अपन देखिबे यूज हुए राइट सो प्रॉपर क्रोनोलॉजी रे अपन को रिसाइटल टा देखिबार अछि ओके रिसाइटल रो बहुत तार इंपोर्टेंट कोन जिंस ना तार एविडेंशियरी वैल्यू बहुत अछि रिसाइटल ठीक अछि सो recitals carry evidentiary importance in the deed. It is an evidence against the parties to the instrument and those claiming under, and it may operate as estoppel. ठीक अछि जोटा कि सुप्रीम कोर्ट कहिसंदी रामचरण वर्सेस गिरिजा नंदिनी 1965. So recitals generally begin with the words whereas. तेनु next part जोटा अपन देखले whereas सेटा हला recital. And when there are several recitals, instead of repeating the word whereas, okay, before each and every one of them, it is better to divide the recitals into numbered paragraphs like whereas number 1 2 3 or whereas सब लिखा दरकार नहीं जदि बहुत गुड़े जिनस आपन को रिसाइटल रे दबार अछि whereas लिखि ताको एमती नंबरिंग कर देबे ओके तो आपन जो एग्जांपल देछि सेठी के आसंतु whereas एठी कोटे ही तरह अछि ओके एंड द वेंडर इज एब्सोल्यूट दिस एंड whereas पुनी author से देला एक्चुअली करंटली ए गुडा ही यूज होछि किछु कोजे whereas 1 2 सेटा नॉर्मली अपन कोर्ट रे देखिबे ओके वेंडर हैज एग्रीड टू सेल हिज हाउस to the purchaser on the terms and conditions hereafter set forth. ठीक अछि so recitals पर्यंत हमें आसिलो that is number 4 hello now the thing is that गोटे एग्जांपल नबो ठीक अछि फर्स्ट आपण खाता रे लिखंतु ओके एग्रीमेंट फॉर सेल ऑफ हाउस काहे ना एटा पूरा कंप्लीट न होला पर्यंत हमें पूरा ड्राफ्ट लिखि पारियोनी एबे जति की पढिनो सेति की लिखिबा देखिबा भी किछ नै जस्ट कॉपी पेस्ट हैला सीधा आपण कॉपी पेस्ट ताको करतु लेखंतु सेटा काहे कि ना सेटा लिखिबाटा ही प्रैक्टिस अप टू रिसाइटल्स ओके अप टू रिसाइटल ताको आपण लेखन आई एम जस्ट पुटिंग इट ओके कि जो मेसेज करछंती ता फोन रे खोलुनी वर्ड ठीक अछि पीडीएफ टा दे देली ओके सेम जिंस रो पीडीएफ तो खोलिबो ना संतर तो सेथरे रिसाइटल पर्यंत जा लेखाइ छि लेखंतु सेटा राइट इन योर नोट ओके सेटा आपन नोट रे लेखंतु टिल रिसाइटल सो वेयर एज एंड वेयर एज सेकंड जोटा से देछि एंड वेयर एज से पर्यंत लेखंतु यू विल राइट इट ओके अपन भाबुती तो लेखाइ छि आपन लिखले कोन हो लिखले हबो कि अपन जदी केबे भी ड्राफ्टिंग करनांती यू हैव टू स्टार्ट इट ओके ये मैथ्स परीक्षा बढ़िया मैथ्स रे अपन सब फार्मूला देखि देई की जाइथिबे ठीक अछि
किंतु प्रैक्टिस करना परीक्षा रे कौन हुए मोस्ट ऑफ अस नो ठीक अच्छे ट्रिगोनोमेट्री आपणकर बाकी जहाँ सूत्र फॉर्मूला सब थिला ज्योमेट्री घरिकारे तो आपण देखि देखि जाइछन्ती टेक्स्ट बुक टा भल रे बट जेतेबेले परीक्षा रे जे बसचन्ती इवन सेम क्वेश्चन पढ़ले भी आंसर आसीबनी काहे ना स्टेप गुडा मु लेखिनी सो यू राइट इट हैला एग्रीमेंट फॉर सेल ऑफ हाउस रु नै की ओके whereas and whereas सेतिकी ओके that much you will write तापरे आसीबो विटनेसिंग ओके सो जोड़ा की बेसिक टर्म्स एंड कंडीशंस आपण देबे ताको कोन कोंती टेस्टाटम ओके जोड़ा आपनकर एटी लेखा हला कोन एंड नाउ दिस एग्रीमेंट विटनेसेस एज फॉलोज ठीक अछि एटी आपण एबे दउचंती कोन द इंट्रोडक्टरी रिसाइटल्स करिका आपण देबे डिटेल स्टोरी गुडा देबे हैला कंडीशंस करिका दउचंती so that is called testatum ओके सेटा काली आमे ताको देखिबा बट एतिकी समस्तंकर क्लियर हबा दरकार एनी टाइप ऑफ डीड यू मेक प्रथम चारटा जिंस एया ही रहिबार अछि पूरा टाइटल दिया हबो जेंति कि एटी दिया गला एग्रीमेंट फॉर सेल ऑफ ए हाउस देखो केते जगह रे जो आपनकर जो मु पढौची जेंति कि सेटा पार्टीज रे से कहूची कि आपण आउरी क्लैरिटी पाई से तारा रिप्रेजेंटेटिव ये से सब लेखन ओके बट दैट इज नॉट रिक्वायर्ड समय भी अधिक न बट ऑफ कोर्स जदी मते टाइम अछि ओके आ मते सेमिति गोटे ड्राफ्ट लिखियार अछि ताको इंक्लूड कर देले ऑब्वियसली आई विल गेट मोर मार्क्स किंतु यू नो सेटा जदी मु स्किप भी करिया पे चाहिबी ताले भी ठीक ही अछि किछ असुविधा नै हैला तो एतिकी पर्यंत आपण लेखन दैट इज टिल द recitals तापर नेक्स्ट 5 नंबर दैट विल बी द टेस्टाटम ठीक अछि टेस्टाटम वी विल बी स्टार्टिंग टुमारो तो विटनेसेस से जो पार्ट है नाउ दिस डीड विटनेसेस ओके आउट नॉर्मली कोन बहुत गुडे जिंस थाए तो आमे लिखुछु नाउ दिस ओके डीड और एटी कोन एटा डीड नॉट एग्रीमेंट कोछु so this agreement witnesses as follows माने multiple paragraphs I am going to give गोटे ही पैराग्राफ दबार थिला ओके नाउ दिस एग्रीमेंट ओके विटनेस खाली सेति as follows ला दरकार किंतु बहुत गुडे अछि जेंति कि एटी अछि आपनकर सेठी as follows आपन को लगाया पे पड़िबो ठीक अछि ओके सो जस्ट गो थ्रू इट एतिकी पार्ट आपनकर ओके सेटा भलरे आपन को पढिबार अछि ओके आउ वंस आपन बेसिक ड्राफ्टिंग ता सिखिले तापर सेठी 2000 टा देछि आपन निजे निजे ताको देखिबे जेते मैक्सिमम जोडा इंपोर्टेंट एग्जाम पे सब गुडा को कवर कर दे पावर ऑफ अटर्नी गोटे देखिबा एटा सेल टा एग्रीमेंट ओके एग्रीमेंट फॉर सेल तापर सेल डीड ओके मॉर्गेज बाई एमति जोडा जोडा सब जिंस इवन पीआईएल्स भी देखि दबा ओके कहना इतरे सब देछि इतरे किछि आउ छडाई ओके दिस इज मोर देन सफिशिएंट राइट इफ यू आस्क मी द सोर्स आपण पछेटा कोडु आसला सो देयर इज मुझे कहउतिले आपण से जो चारिटा सेट रो अछि लेक्सिस नेक्सिस रो आपण जदी ओरिजिनल सेट टा किनिबे तो तारो एक्सेस मिलुची तारो सर्वर को सेटु आपण डाउनलोड कर दे पारे ठीक है तो इनिशियली मु जो यूनिवर्सिटी रे काम करथिली तो ताकर से सब डाटाबेसेस थिला लेक्सिस नेक्सिस थिला वेस्टलो थिला से सब तो से टाइम रो मु ताको ओके पाकरे रखिची एंड इट इज आल्सो ओपनली अवेलेबल ठीक है आपण जदी कोठी लॉ फोरम घरिका जॉइन कर देबे टेलीग्राम रे हो कि इवन व्हाट्सएप रे भी अछि सेमती ओके सेठी जॉइन कर जिवे ताले ई सब जिंस आपण को मिल जिवो ओके सेमिति किछि एक्सक्लूसिव जिंस नो बट बहुत ही इंपोर्टेंट जिंस ओके
ओके फाइन सेतिकी हेला तो रिसाइटल पर्यंत समस्त लिखि परिबे तो लेट मी नो ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड व्हाट इज टू बी रिटन टिल रिसाइटल आपण जदि एमती कहबे कि से रिसाइटल यू नो ता पर्यंत से पर्यंत आपनकर पूरा all of you are confident, then we will tomorrow we will start with okay the test term and now uda मन रखिबे ठीक अछि and now uda मन रखिबे so whereas ta lekha uchi term ta but that is the recital that portion is called the recital hela seita मन रखिबे ठीक अछि तो drafting में से गुडा भी important done it step by step जिबा एमती नै कि गोटे क्लास रे 5टा ड्राफ्ट आमे बडा स्लोली जिबा सब पार्ट आपण टेक्निक कि बुझिबे ठीक अछि ताहले गोटे प्रॉपर ड्राफ्ट लास्ट पर्यंत हेई गला जते बेले बस तापरे एबे आपण निजे निजे आपण ड्राफ्ट रा देखि दे परिबे सेटा सेल्फ वर्क ठीक अछि सेते मु देई देली फाइल्स रो आपण को निजो टाइम नियंतु कहना मिनिमम आपण को दीटा ड्राफ्ट से कहबो लिखिया पे ओके से टीआईएल फेल वाला भी इंपोर्टेंट तो जेडा जुडिशियल सर्विस रे भी पड़े आम स्टेट रे पड़ुनी आम स्टेट रे पड़ो ठीक अच्छे 3 वर्ष तो नथिला ना एबे 3 वर्ष हो गला पर जणर जदि 3 वर्ष प्रैक्टिस अछि एज एडवोकेट ही नोज हाउ टू ड्राफ्ट तो डायरेक्ट थियोरेटिकल क्वेश्चन न पके की एमिति केते गुडे क्वेश्चन सब पड़ियो तो एई जो स्किल टा जदि आपण सिखि नांती लॉ स्कूल रे ताले भलो रे मु बहुत स्लो रे कहबी एटा ओके टिके टिके ताकू देखिबे ठीक अछि त दैट यू कैन डू एबे जो पेस रे पढ़ा होची एटा हैला नुआ लॉस पई जेते बेले पुराना लॉस को हमें जीबा माने जो लॉस गुला ओजेस संगे कॉमन अछि ओके आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस की जा नुआ तीनटा लॉस हैला ओके ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी और सेगुडा टिके फास्ट रहइबो केना मु एक्सपेक्ट करची आपण सेटा पढी छथि नले 2 वर्ष एक्सपीरियंस आपण आसला को बुझ परले तो सेटा टिके जल्दी हो एगुडा मु बहुत स्लोली पढेबी केना एगुडा प्राय बोधे ओजेस रे नाही तो प्राय बहुत पिला पढी नांती सेटा सेते मु स्लो जाउची अदरवाइज like you know 15 to 20 sections in one class सेटा गोटे नॉर्मल स्पीड थाए जदि आमे गोटे पैटर्न रे ताको कंप्लीट करिबा ठीक अछि एटा हमें पूरा कॉन्सेप्चुअली आराम रे बुझी बुझी की सारी राइट सो टिल द रिसाइटल्स ऑल ऑफ यू आर क्लियर और नॉट आपण लिखि परिबे निजे कि नहीं हां Sir, Yes, sir. हां sir, we are clear. यस जदि कोन पचारे अछि केना क्लियर हैला तो ए पर्यंत रिसाइटल पर्यंत ओके Yes, sir. Yes. Sir. so tomorrow we will start from test atom ठीक अछि which is the fifth component out of the 17 components as I told you all 17 are not compulsory ठीक अछि आपनकर जोटा एबे पीडीएफ टा उसे जो येटा दिया हिची सेतर कोन 17 टा अछि तो मोस्ट इंपोर्टेंट जोटा की मैंडेटरी ओके आपनकर सेति की दिया हिची बट आउरी बहुत देई हबो आमे सब गुडा देखिबा ता भितर एक्चुअली ए सब डीड्स ऑफ एग्रीमेंट से कोन अछि सेटा थर थर देखिर अछि so till this much everyone should be able to draft now okay बुझि पाले fine so we'll stop here and मु एक्चुअली टोटली भूली जाई छी आपण सिलेबस दवा पई वीकली टेस्ट रो तो पिला माने कहउतिले सेटा मु नेक्स्ट मंडे रो जो टेस्ट अछि ता सिलेबस आज दे दोची so that 7 दिन आपण को रहबो भी ताको प्रिपेयर करिया पई okay for you and also for the integrated batch so you prepare accordingly okay I forward मु कहि दिली जतना देबी बोली मु से एपटा से स्टूडियो सेटअप होची तो से चक्कर में टोटल भूली जाई छी okay so next week रही आपण को हबो I'll give you the syllabus so you can prepare well and 7 दिन एबे रहला 6 दिन रहला प्रिपेयर करके दे परिबे ओके मंडे एंड ट्यूसडे राइट सो ड्राफ्टिंग पाई के जण जो व्यस्त होतले ड्राफ्टिंग इज क्वाइट इजी आपण खाली स्ट्रक्चर टा मन रखिबार अछि त पैटर्न टा मन रखिबार अछि कोठी आपण कैपिटल लेटर्स लिखिबे बोल्ड ब्लॉक लेटर्स रे लिखिबे कोठी आपण नॉर्मली लिखिबे सेटा ताको टिके माइंड रे रखिबे ओके फाइन so then we'll stop here okay tomorrow we'll continue from your ingredient or component number 5 that is the test atom okay Yes.